in India. In chapter Nationalism in India, you have studied many things. You have studied about the non-cooperation movement. After that, I had started civil disobedience movement. In the civil disobedience movement, you have studied that how Mahatma Gandhi started Salt Satyagraha and disobeyed the government law. Disobeyed the law of the government. According to that, the government had monopoly on to make laws. No one can make law. That was illegal, and the government had imposed very high taxes. So Mahatma Gandhi started his Dandi March on 31st January, on 11th March, and in 1930, and he made the salt from the river water and broke the law. In this chapter, you have studied that there is the civil disobedience movement also take the form of violence, and due to that, Mahatma Gandhi was very upset because at very places people were violating the law, but it at some places it occurred in a violent way. And after that, Mahatma Gandhi went to London to attend second round table conference, and the negotiation was failure. And when he returned back, he found that the Congress party was declared illegal, and there were many restrictions were imposed on the on this party. Means they can't protest, they can't demonstrate against the British policy. There are so many restrictions were imposed on Congress, and many people were in jail. Jawaharlal Nehru, Ghaffar Khan, they were also in jail. So Mahatma Gandhi was in very big confusion. Besides this, he started his civil disobedience movement again in 1934 and 1932, but it lost its momentum in 1934. In this chapter, in this topic, now we are going to see that how participants saw the movement. So who was participant? The people who had made this movement a mass movement, and the participation of different social groups, what they had thinking about this movement. आपने पढ़ा था कि नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट के अंदर स्वराज के मतलब अलग अलग लगाए जा रहे थे, ठीक है, अलग अलग लोग जो थे वो स्वराज का अलग अलग मतलब लगा रहे थे। लेकिन यहाँ पर हम लोग देखेंगे कि सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट के बारे में लोगों की क्या थिंकिंग थी, व्हाई डिड दे जॉइन द मूवमेंट, व्हाट वर देयर आइडियल्स, व्हाट डिड स्वराज मीन टू देम, ठीक है। तो सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट वाज आल्सो अ मास मूवमेंट, and many people participated in this movement, but they have their own thinking, they had their own views about the Swaraj. तो आप इसमें देखेंगे, सबसे पहले हम लोग देखते हैं in the countryside, what happened in the countryside. In the countryside, rich peasant community like the Patidar or Gujarat and the Patidar of Gujarat and the Jat of Uttar Pradesh were active in this movement. Being producer of commercial crop, they were very hard hit by the trade depression and falling price. As their cash income disappeared, they found impossible to pay the government revenue demand. So, in countryside, what happened? The people who were the peasant who were rich community में कौन आते हैं? पट्टीदार, गुजरात के पट्टीदार थे और उत्तर प्रदेश के जाट कम्युनिटी थे.
these people were very active in the civil disobedience movement, बहुत एक्टिव थे, क्योंकि हालांकि ये कमर्शियल क्रॉप्स का ग्रो करते थे, as you are knowing that British were compelling the people to grow commercial crops, so they were growing commercial crops. Besides, they were feeling very some problem, like they were facing the problem of falling rice, ठीक है, फॉलिंग प्राइसेस, जो चीजें चीजें थी उनके दाम गिर रहे थे, ट्रेड डिप्रेशन दे वर फेलिंग, उस व्यापार उनका उतना अच्छे से नहीं हो रहा था, तो दे वर फीलिंग सच टाइप ऑफ problems. So, and the as their cash income disappeared, they found it impossible to pay the government's revenue demands. जैसे जैसे उनके incomes जो थे, उनके पास जो जमा पैसे थे, वो कम होते गए, वैसे वैसे उन्हें अब प्रॉब्लम, उनके लिए इम्पॉसिबल होने लगा कि वो गवर्नमेंट को रेवेन्यू कहाँ से पेड करेंगे, ठीक है, बिकॉज दे वर नॉट हैविंग मनी. सो and the refusal of the government to reduce the revenue demand led to widespread resentment. और गवर्नमेंट से वो चाहते थे कि गवर्नमेंट जो है वो रिवेन्यू को कम कर दे, ये डिमांड जो था वो पूरी सारी जगह फैल रहा था. किसान जो थे, they were unable to pay the taxes, and that's why they were demanding to reduce their revenues, and the refusal of the government to reduce the revenue demand led to widespread resentment. But what happened? Government refused the demand of the people. He was not ready to reduce the revenue of the farmers. तो अब जो गवर्नमेंट ने रिफ्यूज कर दिया, तो क्या हुआ, गवर्नमेंट ने रिफ्यूज कर दिया तो पूरी सारी किसानों के बीच एक अशांति सा माहौल हो गया, एक असंतुष्टि वाला माहौल हो गया. दे वर नॉट नोइंग हाउ दे हैव टू हाउ दे विल पे देयर रेवेन्यू. So, in that case, the rich peasant became enthusiastic supporter of civil disobedience movement, organizing their community and at times forcing delegate members to participate in the boycott programs. ऐसे में क्या हुआ कि जो रिच पेजेंट्स की बात अभी हो रही है, उसके बाद आप गरीब किसानों के बारे में पढ़ोगे. रिच पेजेंट्स जो थे, अब वो क्या किए कि उन्होंने वो सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट्स के बहुत बड़े सपोर्टर बन गए, ठीक है. Now they participated in this movement, and they started encouraging the people to boycott the programs. वो प्रोग्राम को बायकॉट करने के लिए लोगों को इनकरेज कर रहे थे, ठीक है. But they were deeply disappointed when the movement was called off in 1931 without the revenue rate being raised. लेकिन इनका डिमांड जो था, उनका डिमांड पूरा भी नहीं हुआ, रेवेन्यू जो था वो रिड्यूस भी नहीं हुआ, और क्या हो गया उसके जगह पर? उसके जगह पर हो गया कि रेवेन्यू तो रिड्यूस हुआ नहीं, बल्कि उसके जगह पर महात्मा गांधी ने काफी अशांति के माहौल में अपने सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट को 1931 में वापस ले लिया, ठीक है. सो व्हेन द मूवमेंट वाज restarted in 1932, many of them refused to participate. Then after 1 year, when Mahatma Gandhi came back from the London and he started non-cooperative civil disobedience movement, so most of the rich peasants were refused to participate in it, because their purpose was to reduce the taxes, and that was not done in the previous, the work was not done on this revenue. So he was he was not happy. That's why in the second time when Mahatma Gandhi started movement in 1932, many of the rich peasants refused to participate in it. Okay, if you many questions will be formed from that that non-cooperation movement and civil disobedience movement. How the people feel about this? What they have? What their reaction about this? So, it's this type of question will be framed. So, the poor and peasantry were not just interested in the lowering of the revenue demand. Many of them were small tenants, cultivated land, and they had rented from landlords. As the depression continued and cash in became dwindled, the small tenants found it difficult to pay their rent. They wanted the unpaid rent to the landlord to be remitted.
अब जो गरीब किसान थे उनको लैंड रेवेन्यू को रिड्यूस करने में इंटरेस्ट नहीं था, उनका इंटरेस्ट किसमें था, उनके साथ एक्चुअली वो क्या किए थे कि कुछ जमींदारों से वो जमीन को रेंट पे लिए हुए थे और उस लैंडलॉर्ड से जो रेंट पर लिए हुए थे उसी जमीन से वो खेती कर रहे थे। लेकिन जैसे ही डिप्रेशन कंटिन्यूड हुआ उनके कैश इनकम भी कम हो गए और वो चाहते थे कि वो छोटे छोटे जो टेनेंट्स थे, वो छोटे छोटे किसान, छोटे गरीब किसान जो थे, जो कि इन्होंने किराए पर लैंड लिया था, उनके लिए अब अपने उस जमीन का किराया पे करना मुश्किल हो रहा था। तो वो क्या चाह रहे थे, वो चाह रहे थे कि ये जो रेंट है वो लैंडलॉर्ड्स उन्हें खत्म कर दे, उन्हें माफ कर दे। सो दे वांटेड द अनपेड रेंट टू द लैंडलॉर्ड टू बी रिमिटेड। वो चाहते थे कि जो लैंडलॉर्ड जो जमीन लिए हैं, उन जमीन का किराया जो लेते हैं वो उन्हें माफ कर दे, वो उन्हें कम कर दे। ठीक है। So they joined a variety of radical movements, often led by socialists and communists. ये पुअर किसान जो थे उन्होंने बहुत सारे मूवमेंट ज्वाइन किए थे, बहुत सारे उनका मूवमेंट चल रहा था और उन मूवमेंट का नेतृत्व करने वाले बेसिकली कौन थे, तो बेसिकली थे सोशलिस्ट और कम्युनिस्ट। ठीक है। Apprehensive of raising issues that might upset the rich peasants and landlords, the Congress was unwilling to support no-rent campaign in most places. So the relationship between the poor peasant and the Congress remained uncertain. और जो कांग्रेस जो थी इनके नो रेंट वाले मामले में शामिल नहीं हो रही थी, क्योंकि अगर वो नो रेंट वाले मामले में शामिल होती तो लैंडलॉर्ड्स का जो उन्हें सपोर्ट मिल रहा था वो सपोर्ट नहीं मिलता। इसलिए कांग्रेस के लीडर्स ने इन गरीब किसानों का कोई साथ नहीं दिया, क्योंकि कांग्रेस के लिए इन गरीब किसानों से रिलेशनशिप का मतलब था कि कांग्रेस जो है वो लैंडलॉर्ड्स के अगेंस्ट हो जाती। और इसलिए इसलिए कह रहा है कि जो गरीब किसान और कांग्रेस थे इनके रिलेशनशिप हमें अनसर्टेन की स्थिति में ही रह गए। अब हम देखेंगे बिजनेस क्लासेस पर सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट्स का क्या असर रहा। तो व्हाट अबाउट बिजनेस क्लास, हाउ डिड दे रिलेट टू द सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट, उन्होंने सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट को कैसे रिलेट किया। So during the First World War, Indian merchant of industries had made huge profit and became powerful. Keen on expanding their business, they now reacted against colonial policies that restricted business activity. तो बिजनेस क्लास ने सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट के साथ कैसे उन्होंने अपने आप को रिलेट किया। तो यहाँ पर फर्स्ट वर्ल्ड वार के वक्त क्या हुआ कि इंडियन मर्चेंट्स और इंडस्ट्रीज ने उनका बहुत ज्यादा प्रॉफिट हो रहा था। आपने पढ़ा था कि फर्स्ट वर्ल्ड वार हुआ था तो उसके बीच इन लोगों ने काफी बिजनेस किया था, उसमें उन्हें काफी उनके पास पैसे आ गए थे और वो पावरफुल भी हो गए थे। ठीक है। सो वो अपने बिजनेस को और बढ़ाना चाहते थे। So they now reacted against colonial policy and restricted business activity. वो चाहते थे